Yeah, hi guys. So many days I didn't make any video and upload any video, but no worry. Sometime I was busy. That is the reason. But and last in my last video, I also said same thing. Like since morning, since today's I will make video and I will upload video every single day. But I could not. But I decided because that time I was confused. What should I do? Which thing is good for me, which course is good for my future, and finally I got find this course, which course make my career bright and gold. I decided, and now I totally clear my confusion. And second one thing I can't explain in that video. In next video I will say this thing probably, because this thing also made me very confused and disturbed, but that thing also I clear, because I pray to God every single day. वो बोलते ना, जब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है तो हमें ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए. He or she definitely gives some symptom, some signal, and if we pray to God every day and do meditation and close our eyes and like thinking about just only this thing, so automatically this thing, whichever thing, जिस भी क्वेश्चन का आंसर हमको ढूंढना होता है, विच एवर क्वेश्चन आंसर वी वांट टू सर्च, वी वांटेड टू सर्च, वी वांट टू फाइंड, एंड डेफिनेटली वी कैन फाइंड. So like this happened with me, so I'm so happy, and totally I'm free to make video and upload the video on my YouTube channel. If you want to learn English 2 easy ways, so please watch every video and speak and try to speak by your own. खुद से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है. अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के साथ साथ कुछ अनदर थॉट्स क्रिएट करने हैं, कुछ अनदर एक्टिविटी पर भी ध्यान देना है, सो सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आई एम नॉट हियर जस्ट ओनली लर्न, आई एम नॉट हियर फॉर जस्ट ओनली learning English and learning teaching that language. Apart from that, whichever knowledge I gain from anywhere, so I will explain in between video. Okay, so first of all, today I'm gonna tell you about English to Hindi translate, otherwise Hindi to English translate. First I will tell Hindi, then I will translate English. So don't practice because you are beginner, and if you are intermediate level, like you are one step ahead as rather than beginner, so you can pause the video and you can translate the English. Otherwise just only listening, एक समय पे एक काम ही करना होता है. we have to do one time one word, definitely we will get good result in this, on this thing, whichever thing we want to get. सो लास्ट में हम कुछ सीखने वाली और सिखाने वाली बातों पर डिस्कस करेंगे, बट नाउ अभी हम केवल और केवल इंग्लिश पर फोकस करेंगे. ओके, सो मैं कल उनके घर गई थी, वो उनका डोर बंद था. उनका डोर बंद होने की वजह से मुझे वापस मंदिर जाना पड़ा. यस्टरडे आई वेंट हर होम, हर डोर वॉज क्लोज, that's the reason I had to go back temple. मंदिर जाते जाते मैंने देखा कुछ लड़कियां लड़कों से बात करते करते जा रही थी. While going to the temple, I had seen some girls talking with some boys. मैंने देखा उसमें से कुछ बॉयज़ बहुत ज़्यादा बड़े थे, लाइक 30 to 32 ईयर ओल्ड, और मैंने देखा उसमें से कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा छोटी थी, लाइक 15 to 16 ईयर ओल्ड. सो मैंने देखा, सो आई हैड सीन देयर आर 3 to 4, like some boys was too elder and some girls also too elder. For example, I had seen some girls was 15 to 16 year old and some boys was 30 to 30 year old. So मैं देखकर आश्चर्यजनक से उनकी तरफ देखने लगी. After that I feel very
unfortunate, and I feel very outstanding, and I had seen, और वो भी मुझे मेरी तरफ देखने लगे. देन वो देन दे आर ऑल्सो दे ऑज ऑल्सो लुक एट मी. बट मैंने अपने काम पर ध्यान देना, अपने काम पे ध्यान देना ज़रूरी समझा. मैंने इग्नोर किया, वहाँ से निकल गई. बट दैट टाइम आई वॉज थिंक I have to need to focus on my work. Then I ignore it and avoid it, and I left from there. मंदिर जाकर मैंने पहुंचा. मेरी कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी मंदिर में जाके बैठी थी और पानी पी रही थी. When I had reached to the temple, so I had seen my some of friends already reached there and sitting there beside the temple on the chair, and they was taking water. मुझे देखा तो सारी बहुत खुश हुई, मुझे हक किया. देन हमने 30 मिनट कॉन्वर्सेशन कंप्लीट किया. उसके बाद मैं मंदिर गई, वर्शिप किया. वहाँ से लौटकर घर जाने के लिए निकली. When I entered the temple, then I had seen my some of friends beside the temple on the chair sitting and taking the water. So after reach there and after looking me, them feel very happy and hug me one by one, because there are few my friends and few, that means not for few friends, not my close friend, just only 3 friends to my close friend and 2 friends just only overall speaking, for just only speaking. So after seeing me hug me and feel very happy, and we conversation each other at least 30 minutes, then I enter the temple, then I did worship, and I go back from the temple, and I left the temple for go back home. So मैं घर जाने के लिए निकली. देन वॉइल को मैंने जाते जाते कुछ स्नैक्स में खाया, बिकॉज ऑलमोस्ट 5 बज गए थे. देन वॉइल गोइंग बैक होम आई टुक समथिंग एनी स्नैक्स, एंड बिकॉज ऑलमोस्ट वॉज 5 PM. फिर मैं घर पहुंची. घर पहुंचने के बाद देखा कि ऑलरेडी कुछ मेरे कज़िन्स मेरे घर आए हुए थे. वो मेरा वेट कर रहे थे. मेरा फ़ोन घर पर ही होने की वजह से वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, और इसीलिए मैं घर पहुंची तो वो सब मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे. देन आई रीच द होम, देन आई नॉक द डोर, देन माई मदर ओपन द डोर एंड आई एंटर द होम. सो आई हैड सीन my some cousin. There are 1 boy and 3 of girl already visited at my home, already came to my home, and after seeing me they said they feel very sad, and they had seen me very different way. So I thought, oh my god, what happened? So I and he there are few cousin friend included to my mother, 6 member stand up front of me. So I feel very very like little just only feel very sad. So I had seen, oh my god. So that time just thing I remember, oh my god, I forgot I left my phone at home. That's the reason someone could not make a call to me, and someone can't talk with me. That's the reason, and I don't know they since when sitting here and waiting for me. That's the reason he feel he was saying like this, he is saying like this. But I thought, no problem, it is my mistake, it is my I made mistake, so I will apologize to anyone. So I first I talk with them with very apologize and very politely in English, not Hindi and Marathi. Oh, you are waiting for me. I knew what's the reason. What I knew very well. There are behind the reason, because I left my phone at home. That's why you didn't contact with me. But I apologize, and I have some good news for you. So वो ऐसा बोलने के बाद वो सारी
कजिन्स उनको जो भी सैडनेस था वो भूल गए थे, बिकॉज गुड न्यूज़ सुनते ही ऐसा लगता है जब हमारा कोई करीब का फ्रेंड बोलता है गुड न्यूज़, तो वो हैप्पी होके बोलता है बताओ बताओ, एंड यू नो, तो लाइक दिस हैपन विथ मी दिस डे. So मैंने कहा नो नो, एक्चुअली जस्ट ओनली वेरी बिग न्यूज़, वेरी बिग गुड न्यूज़, लिटिल गुड न्यूज़, but first of all apologized me, you didn't contact me, that's the reason. So he said no 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 problem, please sit here, sit here, mother, please get her water and say me the good news, and all of sit front of me. And my mother said first of all please take something, because since morning you left home and now you reach home, so now now you can see to the log to the clock to the between approx 6 p.m. So first you have to take something in snacks, then you can talk with them. So I said mama don't worry, while coming back home I took something, that's the reason I feel good and well, don't worry, but please make a different thing in a dinner, because my some of cousin came to our home, came to our home, like बहुत मैंने हिंदी में उनको बताया मम्मी को, लाइक खाने में कुछ अच्छा सा बनाओ, कुछ डिफरेंट डिश बनाओ, बिकॉज मेरी जो फ्रेंड्स है वो बहुत समय बाद यहाँ आई है. फॉर एग्जाम्पल मम्मा प्लीज मेक समथिंग इन अ डिनर, बिकॉज माई ऑल ऑफ कजिन केम टू अवर होम आफ्टर अ लॉन्ग. मम्मा सेड ओके डोंट वरी, आई ऑलरेडी डिसाइडेड मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या बनाना चाहिए. So mother said, oh don't worry, I already decided what should I make in dinner for you, for everyone. So I said okay, then I said okay, then she entered the kitchen and started to make something for dinner, and we talked on us, and we started to conversation with my cousins. So in between she said please say the good news, but I didn't say, because I don't because I haven't any good news, just only like this happened, like it was my mistake, that's the reason I said this thing. But while conversation, I was thinking what good news and what good news we have to say to anyone, because मैं जिस लेवल पर अब खड़ी हूँ वहाँ पर कुछ इतना सारा करने का है और मैं कर रही हूँ. मेरा जो प्रयत्न है, जो चालू है, कंटिन्यू मैं कर रही हूँ और मैं डेफिनेटली कर लूँगी, उसमें सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगी, ट्रस्ट है. बट चाणक्य नीति में लिखा होता है, एक्चुअली आई लाइक टू रीड बुक एंड नाउ डेज आई स्टार्टेड टू रीड बुक, दैट्स द रीज़न आई सेड यू आई हैव सो मैनी थिंग फॉर टीचिंग टू यू अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट टू दिस लैंग्वेज. सो चाणक्य नीति में कहा होता है कि जो हमको पाना होता है उसके लिए हम जो कोशिश कर रहे होते हैं वो दिखी सबको, ठीक है, बट हमको जो पाना है वो हमको किसी को नहीं बताना होता है. सो विच एवर थिंग आई वॉन्ट टू डू एंड विच गोल आई मेड इन माई लाइफ एंड विच गोल आई विल गेट विच गोल आई विल गेट सक्सेस in upcoming 2025, I decided, I knew very well, so I can say this thing. So I thought no I will not say this, I should not say this, I should not share this thing with someone, मुझे ये बात इनसे शेयर नहीं करने चाहिए. सो मैंने बताया ओके एक्चुअली good news, that means now I'm able to speak English confidently, yeah, because after hearing this good news, both are said, they said oh my god, this good news, I thought it's different good news you have and you will say to us. So I said देखो जो इंग्लिश जर्नी थी मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट थी. माई इंग्लिश जर्नी वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट मैंने खुद पे विश्वास रखा, प्रैक्टिस कंटिन्यू की, और फिर मैंने देखा कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है. एक्चुअली आई हैड एक्चुअली इट वॉज माई इंग्लिश जर्नी वॉज टू डिफ़िकल्ट, बट आई practice every single day, I practice continue, then I had seen my confidence level
वेरी लो, सो मैंने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने पर वर्क किया. देन आई स्टार्टेड टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, एंड टुडे rather than this day I have much and more confidence for talk with someone. So it is good news for me. And मेरी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए. So he said, yes, 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 you speak confidently. English is a required for every field. English is a required language for every field, especially whichever thing I want to do. उस फील्ड में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. विच एवर फील्ड आई वॉन्ट टू डू, विच एवर थिंग, विच एवर गोल आई वॉन्ट टू फिल, इन दैट फील्ड इंग्लिश हैज़ अ रिक्वायर so much and confidently. That's the reason this is a good news for me. If you feel happy after saying this, so sit here, otherwise go back your home. So he said, no, please don't feel bad, because in your happiness I also happy, we are also happy, so don't worry. I hope you learn something from that video. So keep learning. And second, once again I said, if you want to learn so many things except to English language, so subscribe that channel and like this channel and share with your friends. Definitely I will teach you so many things regarding your life, regarding your school life, college life, and which education related, and I can say in shortly life lesson. So till end watch that video. Thank you so much for this. I hope you keep happy and growing. So yeah, career related also I will teach so many things. So for the next video, please wait for the next video. We will see you in next video. Until see you and bye.